हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। Learned counsel for the petitioners has primarily emphasized that learned prescribed authority while rejecting the application moved by the petitioners for cross-examination of the witnesses produced by the plaintiffs has erred in law. He has also stated that while rejecting the application seeking permission to cross-examine the witnesses, the learned prescribed authority has not assigned any plausible reason therefore. His further submission is that a specific ground was taken by the petitioners by filing appeal before the appellate court against the order dated 22nd December 2012 passed by the prescribed authority. That learned prescribed authority has wrongly rejected the application seeking opportunity to cross-examine the witnesses, but learned appellate court has also not considered the said prayer in its correct legal perspective. In this regard, he has submitted that application made by the petitioners before the appellate court was rejected on 22nd November 2014 with the observation that the issue will be considered by the appellate court at the time of final hearing of the matter. However, while rendering the final judgment, the appellate court has not considered the said prayer and has also not taken into account the ground raised by the petitioners related thereto by observing that the application made by the petitioners stood rejected earlier and as such there is no justification in considering the said application. Apart from the aforesaid ground of denial of opportunity to cross-examine the witnesses, learned counsel for the petitioners has also stated that in fact the findings of fact recorded by the learned prescribed authority which has been affirmed by the appellate court in respect of bona fide need and comparative hardships is also against the evidence available on record. On the other hand, learned counsel representing the respondents has submitted that in the facts and circumstances of the case no interference by this court is warranted in the judgment rendered by the prescribed authority, which has been affirmed by the appellate court. He has also stated that in absence of any provisions under UP Act number 13 of 1972 permitting cross-examination of the witnesses, there is no illegality which can be said to have been committed by the prescribed authority in denying the said opportunity to the petitioners. Taking up the first argument raised by the learned counsel for the petitioners, I may only refer to the contents of
the application made by the petitioners before the prescribed authority. The said application is on record. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक ठाक से आप लोग नहीं बना पाए तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो जो ठीक ठाक लिखे उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो जो आप लोगों ने गोल गोल किया है तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे तब अगर एक डिक्टेशन खराब आया है तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए। पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो जो गलत हुआ उसका, अभी इंग्लिश में जो जो गलत हुआ, क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो जो मिस्टेक हुआ, जो जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए, फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे, आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM to 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं, और आउटलाइंस भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपका हिसाब आपका मर्जी से आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है, यही हम लोगों का सबका मोटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।